Welcome student in Christchurch Convent Digital Classes, subject chemistry, class 11th. In this video we will see about bond enthalpy. So what is bond enthalpy, or bond enthalpy is also called bond energy. So it is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state. The unit of the bond enthalpy is kilojoule per mole. For example, the HH bond enthalpy or energy means, HH means हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसको HH बॉन्ड बोलते हैं. तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 435.8 किलोजूल पर मोल. It is shown by chemical reaction also. Hydrogen, which is present in gaseous state, has broken into hydrogen atom in gaseous state, but this can be achieved by giving 435.8 kilojoule per mole energy to hydrogen molecule. तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी. सिमिलरली बॉन्ड एंथैल्पी फॉर मॉलिक्यूल्स containing multiple bond, for example O2 and N2, will be as under. To breaking double bond between oxygen atom we need 498 kilojoule per mole energy, and to break triple bond between nitrogen atoms it require 946 kilojoule per mole. So as you can see, as the number of bond increasing, the bond energy is also increases. So it is important that the larger the bond dissociation enthalpy, stronger will be the bond in the molecule. तो बॉन्ड एनर्जी का मान जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल के लिए. फॉर अ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl we have 430 bond energy, we have 431.0 kilojoule per mole. In case of polyatomic molecules, the measurement of the bond strength is more complicated. For example, in case of H2O molecule, the enthalpy needed to break the 2OH bond is not the same. So this is complicated. As you can see, water molecule in gaseous state, when we broke into hydrogen atom and OH gaseous state, the bond enthalpy is 502 kilojoule per mole. But if we break the bond between oxygen and hydrogen, it requires 427 kilojoule per mole. So the difference in the bond enthalpy values that shows the second OH bond undergoes some changes because of the changes chemical environment. This is the reason for some difference in the energy of the same OH bond in different molecules like C2H5, ethanol and water. Therefore, in a polyatomic molecule, the term mean or average bond enthalpy is used instead of bond enthalpy. We calculate mean average bond enthalpy. It is obtained by dividing the total bond dissociation enthalpy by the number of bond broken, are explained below in case of water molecule. 502 and 427. If we add these two divided by 2, we'll get 464.5 kilojoule per mole. So in heteroatomic molecule we use average bond energy or mean bond energy. Next is bond order. We'll see what is bond order.
In the Lewis description of covalent bond, the bond order is given by the number of bonds between the two atoms in a molecule. So it is nothing but, bond order is nothing but the number of bonds which is present in a molecule. The bond order, for example, in H2 molecule with single shared electron pair, comma in O2 with two shared electron pair, and in N2 with three shared electron pair is 1, 2, 3 respectively. Similarly, in carbon monoxide, three shared electron pair between carbon and oxygen, so bond order is 3. For N2 the bond order is 3, and its delta H bond dissociation energy or enthalpy is 946 kilojoule per mole, being one of the highest for a diatomic molecule. That's why nitrogen gas is more stable in the environment, and its occurrence is 78% in the environment because its bond energy is the highest in a diatomic molecule, that is 946 kilojoule per mole. Isoelectronic molecules and ions have identical bond orders. For example, F2 and O2 minus have bond order 1. What is isoelectronic molecules or isoelectronic species? The atom, ion or radical which has the same number of electron in its electronic configuration is called isoelectronic molecules. For example, F minus, neon, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus are isoelectronic species. Similarly, isoelectronic molecules are there like F2, O2 2 minus, N2CO or NO plus have bond order 3. So a general correlation useful for understanding the stability of the molecule is that कोई भी अणु कितना स्थायी होगा, एक बार बन गया तो फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता या बहुत देर तक बना रहता है, ये उसकी स्टेबिलिटी कहलाती है। तो हमको एनवायरनमेंट में या केमिस्ट्री में वही मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो स्टेबल हैं, लाइक आयनिक बॉन्ड, so that's why a general correlation is useful for understanding the stability of molecules. With increase in bond order, bond enthalpy also increases and bond length decreases. Now next heading is resonance structure. It is often observed that हमेशा ये देखा गया है कि that a single Lewis structure is inadequate for the representation of a molecule. कुछ मॉलिक्यूल के लिए लुईस स्ट्रक्चर का एक सिंपल स्ट्रक्चर कम पड़ता है या पर्याप्त नहीं होता उसको शो करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमें उसके एक से अधिक स्ट्रक्चर या संरचनाओं की आवश्यकता पड़ती है लुईस स्ट्रक्चर की। इन कन्फर्मिटी विद इट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पैरामीटर्स, तो एक्सपेरिमेंटली जो हम उनके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, ये सब चीज़ें निकालते हैं तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम या ज़्यादा आती है, तो इस वजह से हमें फिर एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए हम देखें, एग्जाम्पल ओजोन या O3 मॉलिक्यूल का लें, तो इसमें ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो ओजोन के केस में यदि हम देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमको
ओजोन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें जो फिगर 4.3 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन मॉलिक्यूल का या O3 मॉलिक्यूल का। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द 2 कैनोनिकल फॉर्म्स। किसी भी मॉलिक्यूल के जो मल्टीपल स्ट्रक्चर होते हैं उनको कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं। तो इसमें ओजोन के 3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, लुईस स्ट्रक्चर, जिनके बीच में बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल के बीच में जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ 148 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है। जहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 121 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 पिकोमीटर की है। तो बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग आ रही है तीनों स्ट्रक्चर में। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं वो ओजोन मॉलिक्यूल के हैं, जिनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फॉर्म बोलते हैं। जिस मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे या कैनोनिकल फॉर्म होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। In both structure we have a oxygen-oxygen bond with single bond and oxygen-oxygen double bond. Between two oxygen atom we have also single bond and double bond both. The normal oxygen-oxygen single bond and double bond lengths are 148 picometer and 121 picometer respectively. मतलब सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर होती है, डबल बॉन्ड के बीच में 121 पिकोमीटर होती है। Sorry. So experimentally determined oxygen-oxygen bond lengths in O3 molecule are same, is 128 picometer. Thus, the oxygen-oxygen bond in O3 molecule are intermediate between a double and a single bond. Obviously, this cannot be represented by either of the two Lewis structures shown above. So for this, we will use third structure also. The concept of resonance was introduced to deal with the type of difficulty experienced in the depiction of accurate structure of molecule like O3. So according to concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, that means either its bond length or some other parameter, a number of structure with similar energy, position of the nuclei, bonding and non-bonding pair of electron are taken as the canonical structure of the hybrid, which describe the molecules more accurately. For example, we have 3 structure for O3 molecule. The 2 structures shown above constitute the canonical structure or the resonance structure of the hybrid and their hybrid. That is, the third structure is called hybrid structure of the ozone molecule. This is called resonance hybrid. This is called resonance hybrid. Resonance is represented by a double-headed arrow. Means the arrow having sign both side. So in figure 4.5 you can see the resonating structure of a resonance hybrid of CO2 molecule, and the structure 1, 2 and 3 are the canonical forms. So in general it may be stated that यह कहा जा सकता है कि resonance stabilizes the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure, and resonance averages the bond characteristic as a whole. Means the bond energy, bond length
etc. Thus, the energy of the O3 resonance hybrid is lower than either of the two canonical forms. Many misconceptions are also associated with resonance, and the same need to be dispelled. We should remember that the canonical forms have no real existence. They are just our imagination. The molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in other canonical form. ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल कुछ समय के लिए एक कैनोनिकल फॉर्म में रहेगा और कुछ समय बाद कुछ दूसरा कैनोनिकल फॉर्म अडेप्ट कर लेगा. ऐसा नहीं होता है. दिस इज आवर जस्ट इमेजिनेशन. देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म एज वी हैव between tautomeric forms. Tautomerism is a kind of isomerism we will see in organic chemistry. So there are two forms, keto and enol, in tautomerism. The molecules as such has a single structure, which is the resonance hybrid of the canonical form, and which cannot as such be depicted by the single Lewis structure. So these are the misconceptions which we have to remember. These are just gossips about the canonical form. These are not true. So thank you for watching. See you in the next video.